अगर आप बैंक पेंशनर्स हैं और पेंशन अपडेशन व एक्स ग्रेशिया के बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी पीछे मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि सभी व्यूअर्स से अपील की थी कि एक एआईबी पार्क द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें कि ऑनलाइन मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर को। उस वीडियो जारी करने के बाद काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन मेमोरेंडम भी सबमिट किए हैं और मेरे पास कंफर्मेशन भेजी कि हमने सबमिट कर दिया। इसी कड़ी में एआईबी पार्क द्वारा 12 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्टर को फिर से एक लेटर लिखा गया है। उस लेटर में आखिर एआईबी पार्क ने क्या लिखा, वो लेटर लगभग 5 पेज का है। तो मैं ये चाहूँगा कि उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाए और उस लेटर को मैं पूरी तरह से दिखाऊंगा। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, आप डिटेल पत्र देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को वहां पर पॉज करके देख सकते हैं। आइए एआईबी पार्क द्वारा क्या लिखा गया। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स रिटायरीज फेडरेशन AIBPARC circular number 100-23 dated December 12, 2023। ये जो एड्रेस किया गया है फॉर सर्कुलेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल, स्टेट सेक्रेटरीज, स्पेशल इनवाइटीज, एडवाइजर्स, एफिलिएट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और CBPRO and members. Dear comrades, subject of Fervent appeal for immediate intervention directing IBA to implement pension updation in line with Regulation 35(1) with its amendment in 2003 and in pursuance of RBI formula. We reproduce here under the text of our letter written on date to the Honorable Union Finance Minister on the above mentioned subject. This is for information of members. With best wishes and regards. Comradely viewers, Suprita Sarkar, General Secretary. Enclosure as stated, dated December 12, 2023. Srimati Sitaraman, Honorable Finance Minister, Government of India, North Block, New Delhi. Respected Madam, subject, a fervent appeal for immediate intervention directing IBA to implement pension updation in line with Regulation 35(1) with its amendment in 2003 and in pursuance of RBI formula. ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये अक्सर इनके इस लेटर में ही होता है, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। जो इसके मेन कंटेंट्स हैं उसी पर मैं चर्चा करूँगा। पहले तो उन्होंने वी रिमेंबर विद ग्रेटिट्यूड योर्स proactive intervention which ensured the following issues honorably resolved. Revision financial ex gratia for pre-January 86 retirees who are not eligible for pension. B. Improvement of family pension at the rate of 30% of last drawn pay as applicable to central government and RBI pensioners. 100% DN utilization for pre-November 2002 retirees as applicable to central government and RBI pension. The MOU signed between IPA and union and associations providing for an option of pension to those who resign after completing 20 years service eligible for pension. तो ये कुछ अचीवमेंट कि फाइनेंस मिनिस्टर की इंटरवेंशन से हुई हैं उसके बारे में जिक्र किया है। सेकेंड पैरे में लिखा है, इवन at the cost of repetition we consider it pertinent to mention that the bank employees pension regulation 1995 by its regulation 35(1) duly amended and gazetted in March 2003 provides that the basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1. For a ready reference, the formula in Appendix 1 is nothing but the one which was in vogue of
for updation of government and RBI pensioners in the year 1995। फिर ब्रॉड लेटर में लिखा हुआ है, ये जो बताया उन्होंने कि जो गवर्नमेंट और या आरबीआई का जो फार्मूला है वही अपेंडिक्स 1 में लिखा हुआ और उसी स्टाइल में अपडेट होना चाहिए। ऑनरेबल मैडम, द non-implementation of the subordinate legislation by the executive itself is inexplicable and blatant reflection of anarchy under a government which considers the redressal of genuine grievances of a senior citizen close to its governance philosophy। ये बताया उन्होंने कि एग्जीक्यूटिव द्वारा इस टाइप का नॉन कंप्लायंस जो है वो एक अनार्की को रिफ्लेक्ट करता है जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही हो रहा है। ये कि जो बार बार वो कहते हैं कि अपने पिछले लेटर्स में भी कहा है कि जो पेंशन फंड है वही एडवोकेट है, ये ब्रॉड जो लेटर में लिखा हुआ है इन्होंने। द सिग्निफिकेंस ऑफ एडवोकेसी ऑफ पेंशन फंड कैन बी underscored from the cost analysis sheet submitted by us to IBA DFS, which evidence use net accretion to fund year after year, and it presently stands at around rupees 4 lakh crore. We once again request a perusal of our worksheet submitted to IBA Public DFS in respect of each bank showing the cost of pension updation vis-a-vis the affordability of the pension fund to establish that the exercise of updation does not entail any hit to the balance sheet of the banks at the juncture as funds available are adequate. The current profit of the PSB being all-time high, there would not arise any need for government to recapitalize the bank। उन्होंने ये कहा कि जो ऑलरेडी पेंशन फंड है वो 4 लाख करोड़ के करीब है जो कि एडुकेट है पेंशन अपडेशन के लिए, जिसमें कि फिर गवर्नमेंट से कोई भी फंड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ेगा। थर्ड पैरे में इन्होंने लिखा है कि वी विश just mention in brief the cardinal point for your kind consideration। इसमें जो important point है कि updation of pension has been allowed by Government of India to the RBI pensioners from 1st March 2019 and subsequently to NABARD pensioners too. Although we are entitled to the benefit of updation since beginning as per Regulation 35, we have rationalized our demand to extend the benefit of updation from 1st March 2019 as done for RBI pensioners. IBA continues to be in denial mode despite your advice to resolve this। ये AIBPARC के मेंबर पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर को मिले हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और उनके रिक्वेस्ट करने पे फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से डायरेक्ट किया था आईबीए को कि इस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाए, लेकिन आरबीआई द्वारा ये इशू रिजॉल्व करने के बजाय 7 दिसंबर के एमओयू में एफडीओ के साथ एक्स ग्रेसिया देने का डिसीजन दिया गया, जो कि एक नई परिपाटी शुरू की जा रही है और उस एक्स ग्रेसिया पे ये भी नहीं दिया जाएगा और वो वन टाइम मेजर होगा। तो ये एक्स ग्रेसिया कभी भी खत्म भी कर सकते हैं, ये सभी का एप्रीहेंशन है। सी पॉइंट में ब्रॉडली लिखा है, रेगुलेशन नंबर 35(1) was amended in the year 2003 when Sri Atal Bihari Vajpayee ji was the illustrious Prime Minister. Said amendment duly notified in the Gazette of Union Government made pension updation an open-ended scheme universally applicable for all eligible pensioners। ये सभी पेंशनर्स के लिए लागू था जिसमें कि प्रोविजन किया गया था, लेकिन ये अपडेशन अभी तक नहीं किया गया।
ये 4th पैराग्राफ में लिखा हुआ है। Meanwhile, an important event has taken place in the industry at the instance and advice of MOF, Ministry of Finance, Government of India, IBA and UFBU completed wage revision settlement within 1 year of its becoming due. This is an all-time record at the instance of your ministry, and that the IBA has ensured the conclusion of signing MOU with unions of bank employees and officers on 7th December 2020. The government definitely deserves high praise and appreciation for this. इतनी जल्दी एमओ साइन करने के लिए उन्होंने प्रेज किया। गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के बेसिस पे आईबीए ने यूनियन के साथ एमओयू साइन किया 7 दिसंबर को। Long before the finalization of a wage settlement, we have appealed repeatedly written to IBA and the Ministry of Finance that we, the bank pensioners, are the real stakeholder, as 8 lakh of pensioners and family pensioners are there who do not belong to the unions of serving organizations that represent a lesser number than the pensioners. That was exactly the reason why we had serious apprehension that our case would not be properly represented by the unions of serving employees and officers in negotiation with IBA. We made repeated appeals to DFS, IBA and IBA to consult us about the very long pending principal issue of updation of pension formula wide regulation 35(1). ये इन्होंने इस पैराग्राफ में अपना बार बार लेटर्स भेज रहे हैं, मेमोरेंडम भेज रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो कि एक जायज डिमांड है, क्योंकि 8 लाख पेंशनर्स का रिप्रेजेंटेशन जब तक आईबीए के एग्रीमेंट्स नहीं होगा तब तक पेंशनर्स के अपडेशन वाला इशू रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। यूनियंस का जो रवैया रहा है, उन्होंने कभी भी पेंशनर्स के बारे में सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया। 10th और 11th बाइपर्टाइट स्पेशल अलाउंस इंट्रोड्यूस किया, जिसको सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए शामिल नहीं किया गया। तो इससे उनकी नीयत का पता लगता है कि यूनियंस कितना पेंशनर्स के बारे में सोचते हैं। Immediately we wrote to IBA what was the actuarial calculation, has it shared with UFBU and retirees organization. As usual, no reply came from any quarter. The final blow to the senior citizen of the industry came past midnight on 7th December 2023 in the form of an MOU signed by the representatives of IBA and UFBU. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये उन्होंने ब्रॉड लेटर में भी लिखा है कि असली जो चोट लगाई है वो यूएफबीयू और आईबीए ने 7 दिसंबर 2023 को एमओयू साइन करके एमओयू का ये पैराग्राफ दिया है। एमओयू कंटेन्स अ पैराग्राफ ऑन रिटायरीज व्हिच रीड्स एज अंडर, without prejudice to the demand of unions and association for updation of pension for all retirees. It is also agreed that as a one-time measure applicable for the current bipartite joint note period, the monthly ex gratia amount will be considered along with pension by PSB to pensioners who are drawing pension as on 31st October 2022. The applicability of ex gratia amount shall be discussed further. The said ex gratia amount will not attract any other allowance including dearness. अब इस क्लॉज को शामिल करने से ये पता लगता है कि यूनियंस कैसे असली मुद्दा अपडेशन का है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ यूनियन लीडर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने शुरुआत की है तो अब ये अपडेशन के लिए रास्ता खुल सकता है, लेकिन जब कभी भी एक मेजर्स आईबीए इनिशिएट करेगा तो वो उसको हर जगह पे ले लेगा कि हमने अपडेशन कर दिया। A study of aforesaid paragraph gives rise to the following issues.
A monthly ex gratia has been proposed as on, whereas the pensioners are entitled to get pension updation as per the express provision of Regulation 35(1), Appendix 1 with amendment in 2003. B. This amount of mercy has been proposed as a one-time measure for current bipartite. C. Nothing has been told about the quantum and basis of computing this disrespectful ex gratia. There has not been any application of mine in the real sense of the term. IBA has just proposed at last minute and UFU have mercilessly accepted it without verification of its desirability and deferring the long overdue updation of pension. It is simply because the pensioners are not the member of unions and associations of serving employees, public officers. We say no with the conviction. हमें इसका जो मुख्य कारण है कि पेंशनर्स इसके मेंबर ना होने की वजह से कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं होने के कारण ये खेल चल रहा है आजकल जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट होते हैं. E. It is beyond comprehension as to why an ex gratia which was neither demanded nor available within the framework of our pension regulation is proposed to be given by keeping the legitimate demand of updation of pension on the backbone. We strongly believe that the government giving any additional benefit ex gratia will have sanctity only after meeting the legitimate demand of updation of pension, which is our statutory right and pre-exist in pension regulation. ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई अपडेशन ही एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक्स ग्रेशिया का कोई मायना नहीं रहा. फिफ्थ पैराग्राफ में ये ब्रॉड लेटर में उन्होंने फिर से लिखा है, although a widespread misconception is spread that the so-called ex gratia is a precursor to pension updation real, we view it with askance because of objective circumstances prevailing in the industrial relations scenario. This is just a ploy to kill time with the ultimate intention burying a legitimate demand of the pension updation. We have time and again said that the pension updation, if worked out on RBI formula, will not affect the balance sheet and existing corpus of about rupees 4 lakh crore is sufficient to absorb the updation cost. We have explained our stand before officials of ministry and IBA. There is no rebuttal from their side. ये बार बार AIB पार्क मिनिस्ट्री और फाइनेंस को भी मिले हैं और IBA के रिप्रेजेंटेटिव को भी मिले हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक असर नजर नहीं आया. ये सारे पॉइंट उन्होंने कई बार लिख चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसमें अभी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया. लास्ट में जो ब्रॉड लेटर में फिर से उन्होंने लिखा है, gross injustice has been meted to the senior citizen of the banking industry on the basis of the certain wrong perceptions and prejudices. Ex gratia that is agreed to between the IBA and UFU is an awful thrown at the bank pensioners by an insensitive IBA, and at this age and stage of our life, we would not like to be reduced to mere receiver of some gratis. To put mildly, we bank pensioners are hurt deeply at the treatment meted to us that too after waiting for 30 years to get our pension updated. We are certain that yours good self will ensure self-respect and self-dignity to us. We solicit your kind and early intervention with kind regards and yours faithfully. KV Acharya, President, AIBPARC, and Joint Convener, CBPRO, and सुप्रियता सरकार जनरल. दोस्तों,
ये काफ़ी डिटेल लेटर है और ऑलरेडी मैंने इसको सही ढंग से इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं। आशा है कि इस लेटर को देखने के बाद आपको एआईबी पार्क के सिंसियर एफर्ट्स का पता लग गया होगा और वो बार-बार फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनकी ये मुहिम कुछ न कुछ रंग लाएगी। शायद कुछ समय लगेगा, लेकिन बार-बार एफर्ट्स करने से कुछ न कुछ पेंशनर्स के लिए एक नई राह दिखाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। यदि ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, पेंशनर्स के इशूज से संबंधित, तो बैंक पेंशनर्स के बारे में जानने के लिए या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।